Hi viewers. So we met again for today's analysis. I think जो भी एक्टिव ट्रेडर्स हैं मार्केट के अंदर उन्होंने ये ऑब्जर्व किया होगा द वॉल्यूम्स आर वेरी लेस टुडे. आई थिंक जो हमारे बगर प्लेयर्स हैं वेदर इट इज DIAs और FIs, मोस्टली FIs, probably they have gone for a winter break, Christmas holidays and all. और मार्केट में बहुत थिन वॉल्यूम्स थे आज. Although it was our expiry day, we could have expected some fireworks, but nothing happened today, and it was trading in a 250 point range, Bank Nifty, and probably 150 points range of Nifty. Some of the key takeaways from today's market is as follows. So, as I first thing told, it was on a very small range. The bigger players probably have gone for leave, and there was hardly any action on the markets. Bank Nifty yesterday was at PCR around 0.52 and a day for yesterday on Friday, and yesterday it came up 0.59. So it was really oversold index, and today being the monthly expiry हम ये expect कर रहे थे कि एक थोड़ा fireworks either direction में दिखना चाहिए, and mostly we were expecting a short covering क्योंकि monthly expiry थी and very oversold markets, पर वो नहीं हुआ. Now what does this mean? I would interpret this in this way. So yesterday we had a good rally in Bank Nifty. I think जो शॉर्ट्स वहाँ कवर होने थे वो शॉर्ट्स कवर हो गए. आज जो भी शॉर्ट्स कवर हो रहे थे आई थिंक उनके साथ फ्रेश शॉर्ट्स ही बनते गए फॉर नेक्स्ट सीरीज. सो सिंस देयर इज नो वीकली एक्सपायरी इन बैंक निफ्टी, अगर वहाँ शॉर्ट्स बने हैं तो आई थिंक वो नेक्स्ट मंथ के बने होंगे बैंक निफ्टी के अंदर ऑन द मंथली एक्सपायरी. Anyways, we'll see the rollovers on probably the next trading day, and we'll come to know कितने rollovers हुए हैं. But I think अगर rollovers बैंक निफ्टी में हुए हैं तो शॉर्ट्स में ही हुए होंगे, बिकॉज कल भी मार्केट में शॉर्ट्स ही ऐड किए हैं FIs ने. सो अगर मार्केट में शॉर्ट ऐड हुए हैं, आज अगर बड़ी शॉर्ट कवरिंग आई नहीं है, सो बैंक निफ्टी एंड द बैंक निफ्टी वाज ओवरसोल्ड इन टर्म्स ऑफ 0.59 PCR. दैट मीन्स रोलोवर्स बैंक निफ्टी के अंदर भी शॉर्ट साइड से हुए हैं. तो अगर ऐसा है तो बैंक निफ्टी का भी अपसाइड इज लिमिटेड इन द नेक्स्ट सीरीज ऑल्सो एज ऑफ नाउ, और डाउनसाइड का रिस्क ज्यादा है. और अभी ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी की हर रैली शायद नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी में भी सेल ऑफ होगी. बट दिस ऑल्सो गिव्स एन अपॉर्चुनिटी. अगर मान लीजिए नेक्स्ट मंथ के अंदर जो हमारे अर्निंग सीजन स्टार्ट होता है, अगर वहाँ रिजल्ट्स अच्छे आने शुरू होते हैं, या फिर फर्स्ट वीक और जनवरी में जो अपडेट्स आएंगे बैंक्स के, इफ आई एम राइट, आई थिंक HDFC बैंक जनरली गिव्स द क्वार्टरली अपडेट्स इन फर्स्ट वीक ऑफ करस्पॉन्डिंग क्वार्टर. ऑल्सो इंडसइंड बैंक गिव्स, RBL बैंक गिव्स. सो यहाँ से हमें एक ट्रेंड मिल जाएगा कि बैंकिंग सेक्टर में हाउ द डिपॉजिट्स हैव गॉन, हाउ दे लोन ग्रोथ इज देयर, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो इफ दैट कम्स गुड एंड सिस्टम में शॉर्ट्स हैं, तो we might expect a good short covering rally also in the बैंक निफ्टी. निफ्टी की अगर हम बात करें आज, it again tried to go above 23,850, could not sustain. So 23,860 वो रेंज है जहाँ पे 200 डे में प्लेस्ड है. So it could not breach the 200-day exponential moving average today also. It tried yesterday, it failed. It tried today also, it failed. और जो पुट राइटर्स थे जिन्होंने 23,800 पुट राइटिंग करी हुई थी, वो थोड़ा ट्रैप भी हुए. तो अगर थर्सडे को किसी वजह से अगर निफ्टी नीचे खुलता है, ऑल्दो आज यूएस के अंदर एक शॉर्ट ट्रेडिंग सेशन होगा, ओनली हाफ डे, एंड टुमारो दे विल गो ऑन लीव, सो वी डोंट एक्सपेक्ट टू मच ऑफ वॉल्यूम्स एंड यूएस मार्केट्स ऑल्सो. बट इवन ऑन सम अदर ट्रिगर और एनी अदर ट्रिगर, या फिर कोई सेलिंग, अगर फ्रेश सेलिंग स्टार्ट होती है थर्सडे को, देन these put writers on 23,800 are completely trapped, and that might bring a capitulative move on Thursday in the Nifty. So Nifty, be careful on Thursday when you trade. It will not be easy market. अगर निफ्टी जो इस सीरीज के लो हैं, दिसंबर के लो से नीचे फिसलता है, then be careful. I think that means that again the short would be carrying over for the next series also, or the similar analysis which I given on Bank Nifty would follow for Nifty also. But on the other hand, अगर हम 200 DEMA के ऊपर क्लोज होने की कोशिश करते हैं, then I think एक ही कंफर्मेशन आ जाएगी कि जो एक शॉर्ट टर्म आपका बॉटम बना है दिसंबर सीरीज में अराउंड लेट्स से 23,500 ऑड,
probably that will act as a good support for next series. You can have your buy positions, you can take buy positions for next series with a stop loss of 23,500, because वो level फिर इतनी आसानी से नहीं टूटेगा. So, though I have given you the strategies for Bank Nifty, I have given you the strategies for Nifty also for Thursday and for next month. Although, again, we'll be meeting on Thursday, but still, I just thought I'll give you the approach. The problem in this next 3-4 days of December is that FIS की flows बहुत कम हो गए हैं. Yesterday also the gross volume was only 16,000 crores, which is not much. The selling figure in cash was about 190 odd crore, but the overall volume, if we add sell and buy all together, the gross volume was very less. Problem DIS के साथ भी ये हो रही है कि a lot of IPOs are coming into the market. So Friday we will have 5 listings in the IPOs, followed by on Monday also, and then some on Tuesday also, and new IPOs are also adding up. So ये जो पैसा है जो हम बोलते हैं retail money, which is keeping the markets floated, that is fine, but a lot of money of these DIS are also going into this new IPOs, which is not giving them strength to take the market forward. So why I'm saying this is, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो वी नीड FIIs मनी, और अगर FIIs का पैसा नहीं आता है तो शायद मार्केट एक बहुत छोटी रेंज में रहेंगे, या दे विल नॉट बी एबल टू टेक ओवर 24,000, 24,200, 24,200 एंड दोज काइंड ऑफ लेवल्स. हम सबड्यूड ही रहेंगे. नाउ can we expect the FIIs flows to come in January? The problem is, yesterday again the bond yield shot up. It touched around 4.58 again, and correspondingly dollar index also. रूपी ने आज फिर दोबारा ऑल टाइम लो लगाया. So, and Trump trade will again try to pitch in the next month. Q3 earnings में everybody expecting कि और further downgrades आने हैं. So FIIs will not be in a rush. They have done a lot of selling in October, November, December. I don't think they'll be in a rush to, again bring in the money in the emerging markets. Although they will get fresh allocation in first week of January. अगर वो allocation अच्छे आते हैं, so yes, we are getting poised to get some allocation, but they will not be in a rush, because the parameters which are conducive for FIIs to enter into emerging markets, including India, are not that great. आपके bond yields ऊपर हैं, dollar index ऊपर है, rupee is depreciating every day. आज फिर all time low लगाया उसने, and the earnings visibility नहीं है अभी तक. Budget भी इस बार का it's looking like a no event kind of a thing. So those are the some reasons why probably we don't expect FIIs money to come in so fast. But अगर आपके जो क्वार्टरली अपडेट्स हैं वो अच्छे आने शुरू होते हैं, आपके ऑटो नंबर अब आने शुरू होंगे 31 दिसंबर के बाद फॉर दिस मंथ नंबर्स. ऑल्दो वहाँ डेटा वाज नॉट शोइंग वेरी ग्रेट नंबर्स, बट लेट्स सी हाउ इट गोज. So if the government spending picks up and we see those numbers coming up, if we see the inflation going down, and if we see some uptick in the quarterly results of our companies, then I think we are really poised for the big money to come in again, and we'll see a big rally in the markets. So if that happens, if the economy starts turning upwards, if those numbers start looking good, inflation coming down, rupee becoming steady, and probably your Q3 earnings getting some kind of bottomed out and showing signs of green shoots, then you'll see a lot of money coming in. And probably in that circumstances, my personal target for Nifty next year is at least 30,000. I know I'm giving a big target. Everybody is giving a target of only 27,000 at the max, 26,500 big brokerages. The reason for short targets for the brokerages is they're looking for 5 to 10% of earnings upgrade for Nifty in next calendar year. So if that happens, probably those targets are right. We will end up somewhere around 27,000. But if at all the government spending kicks up, your earnings start going up, your rupee becomes stable, Trump trade comes in favor of India, and dollar index and inflation starts to ease out, then the target which I am giving are also possible. So you should keep those targets in mind. But there's a big caveat: until unless we see some big earnings upgrade, those numbers will not be achievable. Apart from that, as I told, no action happened in Bank Nifty, so we already discussed Bank Nifty. FMCG together yesterday was doing good. Today also it was doing good. So FMCG में हमने बहुत टाइम से बात करी है कि बॉटम आउट process स्टार्ट हो गया है.
आईटीसी वाज लीडिंग द वे फॉर एफएमसीजी. आज भी आईटीसी में गेन्स थे, कल भी आईटीसी में गेन्स थे. इवन ब्रिटानिया वाज कंट्रीब्यूटिंग टुडे. आई थिंक एवरी मोस्ट ऑफ द बिग कंपनीज एक्सेप्ट फॉर एचयूएल, एवरीबडी वाज कंट्रीब्यूटिंग इन द निफ्टी एफएमसीजी. और हमने ये कई बार बात करी है, ट्राई टू फाइंड द अपॉर्चुनिटीज इन एफएमसीजी. It will give, it is at really nice levels. I will not say valuations are very cheap. Valuations इंडिया के अंदर for FMCG कंपनी हमेशा हाई रहे हैं, but they are still decent enough to give you opportunities to enter into these companies. क्योंकि जैसा मैंने बताया, अगर इन्फ्लेशन डाउन होता है, वैसे भी ये जो कंपनीज हैं ये प्राइस हाइक्स ले रही हैं. सो अगर इन्फ्लेशन डाउन होता है, प्राइस हाइक्स आपकी ऑलरेडी हो रही हैं, किकिंग स्टार्ट हुई हैं, अगर कंज्यूमर की स्पेंडिंग वापस आती है, इन्फ्लेशन नीचे होता है, या गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ने से जो जीडीपी का ग्रोथ बढ़ता है, you will see a large uptick in this company. Similar is for Nifty Autos also. So be careful. Look for opportunities in these two sectors. Metals, no, it has been trading below 200-day exponential moving average. आज भी Nifty Metals down था. The problem with Nifty Metals is a strong dollar index. So until the dollar index will remain high, आप देखेंगे बेस मेटल्स के अंदर आपको एक बड़ी तेजी नजर नहीं आएगी. और क्योंकि चाइना के अंदर स्टिमुलस के बाद भी वो मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है और एक ट्रम्प ट्रेड प्ले आउट होने के चांसेस हैं. सो ऐसा लग रहा है कि निफ्टी मेटल्स विल स्टिल रिमेन सबड्यूड. देयर माइट बी सम बाउंसेस हियर एंड देयर, बट ओवरऑल इट लुक्स दैट इट विल रिमेन सबड्यूड. हैविंग सेड दिस, चाइना की एक बहुत ही खासियत रही है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई इट हैज बिकम नाउ सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी फॉर लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम. They are able to find their ways out, and Trump has given them a lot of time to find their way out of all these things. It's not that he'll be announcing something very surprisingly. He has told many things in election rally, and probably he'll be sticking to it. उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा होने के chances बहुत कम है. So one thing China market will always do is they will depreciate their currency, which they already started, and I think they will have other plans in mode as well, which will help them to sustain their economy. If that happens, we'll see a rally in Nifty Metals also, Nifty Metal Index, which we are seeing that. So probably you can take some light positions. I'm not saying in derivatives, but in delivery positions. You should buy some stocks in Nifty Metals also. अगर वो play out होता है तो we'll see a big uptick in our Nifty Metal stocks as well. Apart from that, I think US markets का rally कल अच्छा हुआ. Dow was almost 350 points down, but a kind of a Santa Claus rally वहाँ पे हुई. You can say that. I will not say that एक बड़ा rally वहाँ पे हुआ है जो हर साल होता है, but still they could cover up the losses, and all the major indexes, they all closed in green. So whether it is S&P, Nasdaq or Dow, they all closed in green. So that way it is looking better. I think US markets, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि bottom out process के बहुत करीब हैं. And if anybody wants to really invest in US market, that's the best time. It's a great index, and probably the opportunities are much higher in US as of now as compared to other markets, whether it is India, China, Europe, or Japan as such. If somebody has some exposure, and if you have your demat accounts in Argentina, that's another place to be in. That's really looking good. They have done some fantastic turnaround. I'll make a video why Argentina is so good and what turnaround they have done in terms of the economy. But as of now, the Indian markets, I think Thursday also should look like a lean day, because volumes वहाँ भी कम रहेंगे. After Christmas also, they have a Boxing Day in US जहाँ पे उनकी छुट्टी होती है. So probably that looks like it will have a less volume. But since it's a very highly anticipated monthly expiry, we might see some some swings. Probably on the lower side or upside on Thursday. As of now, data does not say that. There are call writings and put writings happening on either of the sides. But if those levels get breached, we'll see some big swings in those indexes as well. So I'll make some video tomorrow as well. Try to cover some aspects tomorrow as well. But as of now, today's action for the stock market is what we discussed. So be careful. The markets are not out of the woods as of now. And but take positions, as I've told you, in lighter volumes. So for example, if you're 100 rupees, take position for 10 rupees, 15 rupees, 20 rupees. So start investing in this market. I think markets कहीं ना कहीं aggressively pricing करने की कोशिश कर रहे हैं Q3 earnings. अगर वो pricing हो जाता है, and any kind of surprise on the earnings or even the commentary of the companies for next month, we'll see a huge rally. So thank you so much for watching the video. Thanks for today's analysis. Thank you.